Say angle DAB is 90 degree है ना, ओके right angle है. अब जरा देखें पहले यहाँ पे। ओके बेटा, कल हम लोगों ने पढ़ लिया था ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। आज हम सर्कल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सर्कल्स को सॉल्व करने का तरीका ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर के अंदर भी आपके पास डिफरेंट कलर की पेंसिल्स जो हैं वो होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि इसमें कोई आर्क तो नहीं बन रहा है। तो पहले एज आई कैन सी दैट दिस वन इज माय आर्क, ये मुझे एक आर्क नजर आता है, यस और नो। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो है इट्स अ सेम पॉइंट। So Marok, this angle would be what? It would be the half of 70, that would be 70 divided by 2. Get it? ये होगा 70 divided by 2 which is 35, which is 35. नीचे क्वेश्चन में मांगा भी है ADB. ADB is 70 divided by 2 which is 35 degree. एंगल एट अ सर्कमफ्रेंस जो होता है मारो ये हाफ होता है, ये हम लोग कल पढ़ चुके थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की शेप बनी है, इफ दिस एंगल इज x तो ये डबल होगा, अगर ये डबल गिवन है तो आपको सिंगल मिल जाएगा। गेट इट एवरीबॉडी? क्लियर है बेटा? Yes sir. ओके, सो नाउ लेट्स सी मूविंग फॉरवर्ड विद दैट थिंग। वेट अ मिनट, अच्छा। सो मूविंग फॉरवर्ड विद बी सी डी। अब जरा चेक करते हैं कि और हम लोग इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ दे से दैट बी सी एंड डी, तो बी सी एंड डी, सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, we need to find out this angle, and this angle can't be 90 because this line is BD is not a diameter. Okay, it is not a diameter. Is this clear? Yes sir. BD is not a diameter, that's the key point. BD is not a diameter, it's not a diameter, right? So angle C cannot be 90, but I can see that that in this case, for example, if I pick this triangle out, can you see that this triangle, that there are two radiuses, this one and this one. Let me erase the previous shading, मैं previous shading हटा देता हूँ, new shading दे देते हैं क्योंकि उसका काम खत्म हो गया। As we can see that Maruf, that this is a triangle and these two lines are isosceles, so it means that 180 minus 70 is what? It is something like that. It is something like that. This is 70. These two lines are same. So these two angles would be equal, means x. So 180 minus 70 is 110, and 110 divided by 2 is 55. So this part is 55. But that's not the problem. The question is something else. According to the examiner, the question is to find angle C. So let me erase this shading now. मैं इस shading को अब हटा रहा हूँ. Let me shade the cyclic chord now. As I can see that this is a cyclic chord. Agree everybody? Yes or no? And according to the definition of the cyclic chord, this angle plus this angle would be 180 degrees. Agree? So angle C is equals to 180 minus 25 minus 55. So 180 minus 80, so that would be 100. Angle C is 100 degrees. Yes or no? Is it clear everybody? Is it clear? Good job. Okay, moving forward with the second question, question number 2. So let's study this now. We can see that there are some theorems which we can apply in this question, but according to the theorem number 1, we know that this is an arc length. बेटा समझ आ रही है आपको मारो? Okay, नजर आ रहा है बेटा सबको? Okay, we must know that this angle would be double of 75. That is what?
75 times 2 is 150 degree. So this angle would be 150 degree. And yesterday we debated that Maro, that this angle would be the half of this one as well. Agree? Agree Maro? Yes, sir. ओके. सो बरीरा बेटा कल हमने डिबेट किया था कि ये एंगल जो है ये इस एंगल का हाफ होगा. So we know this that 360 minus 150 is equals to 210. So that angle is 210, and that angle would be, that blue angle would be 210 divided by 2 is equals to 105. That would be 105. We know that angle at a circumference, if that is 75, so that is also 75. Okay beta, समझ आ गई आपको? That is also the same situation like the first theorem. Agree? Angle in the same segment. Now we need to find out this one. Okay, we know that the total angle on a line is equals to 180 degree. Yes or no? So 180 minus 105 minus 48. As this is in paper one, so no calculator allowed. So 180 minus 105 and 148. So add 105 and 48 first. So 5 plus 8 is 13. So that's 5 and that's 1. So that's 153. So 180 minus 153 would be 180 minus 153 would be 27. So it means that outer angle is 27. Okay. Now we need to proceed in the question. They say that DEG. So where is DE and G? DE and G angle is 75 degrees. We can see that where 75 is, right? They're talking about this angle, angle E. DOG. So DOG is 150, double of that. Okay. And DBC. So DB and C is 27 degrees. So that's how we are done with the question. Anyone जिसको कोई problem हो? Is it clear? Is this clear, beta? Good job. Manok, is this clear? Yes, sir. Okay, look at the question, please. Okay, so we can see that there is a star. I can see few stars in it. Like for example, can you see that? Can you see that? Okay, okay. So beta, this angle would be 62. ये हमने कल डिबेट किया था इस पे. And y is 40. And y is what? Y is 40 degrees. Okay. So we need to find out y. So y is 40. तो y की जगह पे 40 लिखते हैं. ठीक है जी. Okay. Hazim, we can see that starting from this, going toward this one, and this one is a cyclic chord. Agree or not? Yes or no? Yes or no? That ACDE is a cyclic chord. If not, so then I can design in outside as well. That A to C, C to D, D to E, and A to E. So that's A, that's C, that's D, that's E. So that part is 127. So it means that angle would be 180 minus 127. Agree? So that would be angle A is equals to 180 minus 127, which is equals to 53 degrees. So it means that angle is 53. So we got this angle as well, that this angle is 53 degree. Okay. Moving forward with the question, we know that ACE is also a triangle. Agree? आपको नजर आ रहा है बेटा? ACE is also a triangle. ACE is also a triangle in the question. This angle is 53. This angle is 62. And this angle part of angle E is given, which is 40. But we need to calculate it total, and we'll subtract the 40 to find out this missing portion. Because if I get this, it means that I get this. Is it clear?
इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सर हमने 53 कैसे फाइंड किया, मुझे समझ नहीं आई। बेटा आपको साइक्लिक कॉर्ड का थ्योरम पता है ना, कि जब सर्कल में साइक्लिक कॉर्ड होता है तो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं 180 के बराबर होते हैं, ऐसे ही है। हम्म। तो आपको पता है ये मैंने साइक्लिक कॉर्ड बाहर निकाला है आपके सामने, आपको नजर आ रहा है जी जी। ये ए सी डी एंड ई, इट्स आउटसाइड, कैन यू सी दैट? जी So it means that this angle and this angle is equals to 180. In the diagram, I can see that this is 127. So it means that that angle would be 180 minus 127, that is 53. Okay. Isa, you just joined, so try to pay attention. You can see that, look at the diagram, Isa, that AC and E is a triangle. And I have angle A 53, I have angle C 62, and I have angle E, a part of angle E which is 40, but I'll find out complete one. So to find out complete angle, so I need 180 minus 62 minus 53. So 62 plus 53 आपको rough working में करना पड़ेगा because no calculator 115. So 180 minus 115 is equals to what? It's 65. So the part of 40 is given. So it means that 65 is split it in two parts. So 65 minus 40 is this part, which is 25. If this angle is 25, means that this angle is also 25. Okay. Moving forward with the question, I realized that in this triangle, I can find out this angle as well. Because in this little triangle, I have everything. You can see that A, B, and that portion, that is the triangle. So that is B, that is A. Isa, this angle is Y and Y is 40 beta, and this is 62. हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं, ये जो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. So 180 minus 62 minus 40. That is equals to 102. That is equals to 78. It means that this angle is 78. So that is also 78. Agree? I'm going toward X. मैं जी सारे एंगल फाइंड आउट कर रहा हूँ. ठीक है? सर, ये सी भी फाइंड कर सकते हैं ना? कौन सा एंगल सी तो निकला हुआ है बेटा हमने. Okay. फिर moving forward, we know that. Okay, wait a minute. There is one interesting thing in it. मैं जरा ये बाकी शेयरिंग हटा रहा हूँ यहाँ से, ताकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोसीड कर चुके हैं, हम लोग ये कर चुके हैं. ये बाकी शेयरिंग हटा रहा हूँ मैं. अच्छा, जरा एक चीज जरा नोट करिएगा. अच्छा, एक चीज जरा ये नोट करें, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो में सब कुछ आ रहा है, तो ये रिकॉर्ड हो रही है. तो आपको ये नजर आ रहा है कि दिस इज ऑल्सो अ स्टार लाइक थिंग, यस और नो? सो एक्स इज व्हाट? एक्स इज 53. बस हमें वो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है. वी गॉट एक्स, दैट एक्स इज 53. अच्छा, z देखें जरा, z कहाँ पर है? z इधर कॉर्नर में है. एंड देयर आर टू पैरेलल लाइंस एज वेल. अब इस क्वेश्चन में दो पैरेलल लाइनें भी मौजूद हैं. तो जरा इस पैरेलल लाइनों को जरा शेड करते हैं. हाजिम बेटा, ये मैंने पैरेलल लाइन शेड की, इसके साथ ये स्ट्रेट लाइन है. ठीक है जी, ये आखिर में इधर आ रही है. इज इट क्लियर? तो वी स्टडीड दिस ऑलरेडी, दैट को इंटीरियर एंगल ऑफ अ पैरेलल लाइन इज इक्वल्स टू 180. तो जरा यही शेप में z वाली पोर्शन में बना लूंगा, लाइक दैट. ओके, दिस पोर्शन इज y plus 53. So 40 plus 53 is 93. So that part is 93. And look at this part, 25 plus 40 plus z. That's the part. So 25 plus 40 is 65 plus z. So that is 65 plus z. So we know that sum of the co-interior angles of a parallel line, they are equals to 180. So 180 minus 93 minus 65 is z. So minus minus plus. So 180 minus 90 plus 60 is what? 90 plus 60 is 150, and that's 158. 180 minus 158 is what? It's 22 degrees. Is this clear, everybody? ये वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको मैं वर्कशीट जब मिलेगी तो आपने दोबारा रीअटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस. ठीक है? ओके, ये मैंने काफी लंबी वर्कशीट बनाई है, तो काइंडली पे अटेंशन. ओके जी. ईसा जी. बेटा जरा पे अटेंशन. ओके. हाँ. Okay, one of the angle is given which is 32,
and we can see some pair of जी तो parallel ये lines as well. क्यू 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 जो है ये भी 32 होगा। अभी जरा सब्र करते हैं ना, पहले जरा ऐसा करते हैं कि पैरेलल लाइंस को जरा शेड कर देते हैं। ठीक है ठीक है जी, पैरेलल लाइंस हो गई हैं शेड, ये these two are parallel lines, agree? यस So we know that this angle is also 32 32 alternate, yes or no? यस सर Okay, if this is 32 Isa, so beta we know that this is also 32, agree? यस सर और if Okay, this is 32 this is also 32 which P one is 32? ये P के साथ Okay, no, अब जरा थोड़ा सब्र करें। हाँ इन द सेकेंड शेडिंग पार्ट मैं ये पैरेलल लाइनें अब जरा हटा देता हूँ, ठीक है? सेकेंड शेडिंग पार्ट आई कैन सी दैट देयर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एज वेल, कैन यू सी दैट? यस सर Okay, if that side is facing 32, so this side will also face 32 angle, yes or no? 32 yes sir so 180 minus 64 we'll get Yeah, R yes, we'll get R. So 180 minus 64 is equals to what? 116, yes or no? yes sir So we got 116. So that now this angle P is a cyclic chord or not? Hazim, let me yes sir Yes, मैं sir. ये मैं Quadrilateral. हाँ जी तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को मैं शेड करके समझा देता हूँ। देखिए याद रखें, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फौरन जल्दी जल्दी एंगल मिल जाएंगे। इधर देखें जरा प्लीज। सो हमें पता है कि दैट दिस एंगल इज 116, सो दिस प्लस दिस इज आल्सो 180, सो एंगल P इज इक्वल्स टू 180 minus 116. So angle P is equals to what? It is 64 degree. So this is 64 degree. Okay. Isa, जी मेरा बेटा diagram, according to the diagram in this question, we can see that already, Barira, that T to Q is the diameter. Yes or no? Because the line is passing from the जी center. सर So it means बिल्कुल that angle P is 90 as well. Agree? एंगल P जी Yeah. So angle yes P would be 90. So 90 minus 64 is what? mm, It is 26. 20 26 It means that if this is 26, that will be 26 as well. 26 Agree? also yes Yes or no? yes I think we got everything. Let's check what's the requirement. They said I find P, Q, T and give reasons of each of your step to P, Q, T. So we got P, Q and T. Okay, we needed this thing. So how we got this? That हमें step देने हैं तो 3 marks हैं तो 3 reasons देने हैं. First of all, angle T के बारे में बता दें. So an angle PTQ is equals to 32. Angle in a same segment. Angle in a same segment. ठीक है जी. Angle P is equals to 90 degrees. Angle in a semicircle. In a semicircle. And angle PQT, angle PQ and PQT and angle PQT is equals to 180 minus 90 minus 32, which is equals to what? ये कितना आता है जी एंगल PQT? So 180 minus 90 minus 32. So 180 minus 122, which is equals to 68 degrees. So that is equals to 68 degrees. तो यहाँ पे लिख देंगे जी 68 degree. Okay. Now they say find QRS. दो नंबर के लिए reasons नहीं मांग रहा, तो QRS. So QRS is 116. Okay. The reason is 180 minus 32 minus 32. We can see that. Angle TQS, angle TQ. जी बेटा. सर एंगल PQT 58 आएगा 58 आ रहा है. जी. Okay. Thanks. It's 58. तो इसको भी 58 लिख देते हैं फिर यहाँ पे. ओके, एंगल TQS, जरा TQS देख लें. ओके 26 है. 26, दैट इज 26. 1 मार्क के लिए रीजन देने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या वजह थी कि वो 1. बेटा सबको समझ आया क्वेश्चन? ओके जी, इस क्वेश्चन की तरफ बाद में आते हैं, पहले ये कर लेते हैं.
ओके जी, देखिए बेटा, we can see that there are some angles. Explain why AOB is isosceles triangle. AOB. So AO and B is isosceles triangle. What's the reason, beta, that it is an isosceles triangle? Anyone? Because Sir, angle OBA and OAB, sir, angles इनके same है. okay, so we can say that A to O length is equals to O to B length because they both are what? Radius. If two sides are same, so it means that two angles are also same and the triangle is isosceles. Okay, if this is 34, so that's for sure it's 34 as well. Okay, if this is 34 plus 34 is 68, Isa. Agree? So 180 minus 68 is equals to 112. You're right? If this is 112, so that remaining part would be 68. And we can see that this angle and this side is also radiuses. So it means that they both have the same value. So So 180 minus 68 divided by 2. 180 minus 68 is 112 and 112 divided by Divided 2 by is 2 what? is 64. What? Nee, 66. 56. 56, yes. Okay, it's 56. Okay. Yesterday we studied this already that the radius and tangent they make 90 degrees angle. Agree? So 90 minus 56 is this Yes. vertical part. Yes or no? So 90 minus 56 is what? It's 44 or 34? It's 34. Right, Isa? Okay, if this is 56, that would be angle at a line. So 180 minus 56. Very good. So 180 minus 56 is what? Oh, 112. Nee, No, no, 1, no. 1, 124. 4. That would be Sorry. 124. So Mm-hmm. ये छोटा एंगल भी हम निकाल सकते हैं. How? G 180 minus 124 or minus 34. Very good. So 180 minus 124 minus 34. अब कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता इस पेपर में, तो जरा रफ वर्किंग में कर लीजिएगा. So that would be 180 minus 158. That would be equals to 22 degree. अब देखिए नीचे क्या क्या मांग रहा है आपसे. B E C मांग रहा है. तो B E and C that is equals to, अभी हमने निकाला है 22. तो ये इसके 3 मार्क्स हैं. तो ये जो ऊपर जितनी वर्किंग की है सब आप नीचे लिख दीजिएगा. ठीक है? इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? जी सर. ओके, गुड जॉब. और हम लोग इसकी वर्किंग में बहुत छोटा सा ये भी लिख सकते हैं. देखें जरा, हम ये भी लिख सकते हैं कि ओ सी एंड ई जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है. देख लें इसकी वर्किंग में हम ये भी लिख सकते हैं ओ सी एंड ई, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल 90. This angle is 68. So that is 90 minus 68. So that would be equals to 22 डिग्री. बेटा मैं जरा आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाता, वो इसलिए क्योंकि पेपर में किसी भी तरीके का डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है. ये क्वेश्चन तो भी हम लोगों ने कर लिया, ये भी कर लिया है. ओके, ये रह गया. ओके जी, चले जी, कौन कौन बताएगा x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x? So 162 divided by 2. Okay, so angle x is equals to 162 divided by 2, which is equals to what? 81 degrees. 81 degrees. Reason is angle at a circumference is half. Angle at a circumference is half of angle at center. Angle at center. Reason लिखना जरूरी है, तभी 2 नंबर मिलेंगे. Okay, we got this angle that this is 81. Okay, we know that this total angle is 90. Yes or no? So 90 minus 42 is this missing part. So 90 minus 42 is equals to what? It's 38 or 48. It's 48 or 38. It's 48. Right, Hazim? So we can see that all of you, that we have an isosceles triangle in this shape. Now this is an isosceles triangle because these two sides are radiuses.
So 180 minus 62 is 180 minus 162 is equals to 18 degrees, and 18 degrees divided by 2 is equals to 9. So that would be 9, and that would be 9 as well. Okay, so y would be, the total is 90, so y would be 90 minus 9. Y would be 90 minus 9, which is equals to 81 degree. 81 degree, and the reason is angle of tangent with radius is 90 degree. और आप इसके लिए एक दूसरा रीजन भी दे सकते हैं। वो रीजन क्या है, मैंने अभी आज कल आप लोगों को थ्योरम पढ़ाते हुए ये चीज पढ़ाई थी। जरा फोकस कर ले बेटा, मैं शेडिंग कर रहा हूँ, रेड एक ट्राइंगल और बना रहा हूँ, आपके सामने नजर आ रहा है, ए सी एंड बी, ए सी एंड डी, इसे नजर आ रहा है बेटा? जी सर नजर आ रहे हैं। बेटा ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये अंदर के इंटीरियर के बराबर होता है, देख रहे हैं आप? ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये हमने कल पढ़ा था। कौन सा वाला सर? ये जो मैंने 2 शेड किए हैं, ये वाला जो एंगल है, ये अंदर वाले के 81 के बराबर होता है। एग्री? ये हमने कल डायग्राम बनाई भी थी थ्योरम अच्छा पढ़ते अच्छा, वक्त। ये ठीक वाई है, के आप बराबर है। ये y के बराबर होता है, लेकिन इस तरह का ट्राइंगल और टेंजेंट बनी हो तो। ओके ओके। ओके, अब कहता है एंगल z निकालो। अब देखिए z है कहाँ पर, z यहाँ पर है। चलें जी, तो क्या कुछ साइक्लिक कॉर्ड मॉड बन रहा था? देखो ए बी सी डी बन रहा है ना साइक्लिक कॉर्ड, ए बी सी जी सर एंड बन रहा है। दैट्स डी। ये मैं यहाँ पे इस तरह बना रहा हूँ, नाम दे रहता हूँ ताकि आसानी से समझ आ जाए, ए बी सी डी। ओके, ये z अननोन है, लेकिन एंगल डी के ऊपर सारे एंगल गिवन है, यस और नो? ये जो हमने पार्ट निकाला था पहले ही पार्ट में, दैट इज इट वाज 48, तो 48 प्लस 9 कितना आता है बेटा? 57। 48 plus 9 is 57, so 180 minus 57 is z, so z is equals to 180 minus 57, which is equals to 123 degrees. So cyclic quadrilateral have opposite angle sum equals 180 degree. So that's how you can score the credit from the examiner. Is it clear everybody? चलें जी, जबरदस्त क्वेश्चन आया है, बड़े बहुत सारे क्वेश्चन है। चलें जी, जरा वन वन बताते जाए, वन बाय वन बताते जाए। देखें डायग्राम को, मुझे बताएं कि क्या क्या समझ आ रही है। सर पहले तो सर ये ए जो है सर ये टेंजेंट है ए नहीं, 180 अच्छा पूरा, वो P to Q is a tangent क्वेश्चन वही। ये, हाँ जी, P to Q is a tangent, ठीक है जी, ये टेंजेंट है, ठीक हो गया? ओके, और एंगल क्या क्या नजर आ रहे हैं आपको, बताते जाए जी। सर 40 है 80 है। ओके, तो बताएं जी। जी बेटा, कौन सा एंगल 40 होगा? बेटा आप ई नहीं, आपको एक्स जेड डब्ल्यू वाई वी ये सब कुछ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है आपको कि नहीं? देखें जी, आप पहले जरा मैं एक्स के साथ इस 40 को लिंक कर रहा हूँ, देखें जरा प्लीज। हाँ जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? जी जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? Sir, yes, 40. x is equals to 40 degrees because एंगल इन अ सेम सेगमेंट। ठीक है जी, दोनों सेम सेगमेंट में बने हुए हैं, तो x भी 40 है, राइट ईसा? जी ओके, सर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि E to C is equals to EB, EC EB के भी बराबर है, तो EC is equals to EB, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो W भी 80 होगा, एग्री? W is also 80 डिग्रीज, तो 80 प्लस 80 160, तो मतलब ये जो छोटा हिस्सा है ये कितना हो गया जी हमारे पास 20 डिग्रीज। चलें जी, और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। ओके जी, अब जरा ये मैं शेडिंग हटा रहा हूँ, दूसरी शेडिंग लेकर आ रहा हूँ, ठीक है? तो काइंडली पे अटेंशन। ईसा,
मेरा बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही समझाया है कि ये एक ट्राइंगल है, नजर आ रहा है, और नीचे टेंजेंट बनी है, यस और नो? जी, तो तो ये एंगल 90 है। एंगल वी किसके बराबर होगा? कौन सा एंगल वी। एंगल वी? क्या कहते हैं सर? अच्छा, ये एक्सटीरियर है तो ये 40 के बराबर हो। वेरी गुड, तो वी की वैल्यू भी आएगी 40। ठीक है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो ये 40 है तो y जो होगा वो 180 माइनस 40 140। नहीं, अब जरा गौर करो जरा थोड़ा सा। अच्छा, हाँ जरा थोड़ा सा गौर करें कि और इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। ठीक है, अब देखें कोई साइक्लिक कॉर्ड आपको नजर आता है? कौन कौन सा साइक्लिक कॉर्ड नजर आ रहा है आपको? सर ए ई, नहीं सर इसमें तो बन नहीं रहा। दूसरे से स्टार्ट ले लो, बी से स्टार्ट लो। बी बी सी ई ए, ऐसे हाँ जी, बन रहा ना। हाँ बन जी, रहा तो है। ये बन रहा है जी ई बी। पहले ई बी को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ये आ गया जी डी, एंड दैट पॉइंट इज सी। ओके, अब मुझे नजर आ रहा है कि एंगल बी जो है वो 80 है, यस और नो? और एंगल डी जो है सर आपने बी ई डी सी का तो बना दिया ना, तो सर ये ई, बी सी ई ए का भी तो बन सकता है। जी सर, ए भी है ना। बिल्कुल 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 बनता है, नो प्रॉब्लम, हम जेड निकाल रहे हैं ना। अच्छा। एंगल डी, एंगल, देखो आपको एंगल डी नजर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 40 प्लस जेड, यस और नो? यस सर। सो इसका मतलब है ये दोनों 180 के बराबर होंगे, तो जेड की वैल्यू फिर होगी 60। कैसे? 180 माइनस 80 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो जेड इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, अब जैसे आपने बताया कि ए ई सी बी दैट इज ऑल्सो अ साइक्लिक कॉर्ड, तो और ए सर ई, ए डी सी भी है ना। ए हाँ डी सी बी। पहले पहले ये निकाल लेते हैं जरा। ए हाँ ई, ये हो गया जी आपका सी, ये हो गया जी आपका बी, और ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। आपको पता है कि ये ए पे जो एंगल बना है ये वाई है, तो वाई के सामने एक एंगल चाहिए, तो सी अवेलेबल है 80, तो वाई कितना होगा? 100। वाई इज 100। जी, सबको समझ आ गई बेटा? इज दिस क्लियर? यस सर। गुड जॉब। ओके जी, नाउ दे से दैट in the diagram KLM they lie on the circumference on the circle with center O, angle KML, so KML जरा देखें किधर है, KML, okay, KML, this angle is 2x and reflex angle KOL, KOL reflex angle is 11x, find the value of x। जी, तो ये मुझे बताएं ईसा, ईसा, जी बेटा ये एंगल जी। 2x है, यस? तो ये आप हाँ मुझे जरा बताओ कि एंगल एट सेंटर क्या होगा? ये क्या होगा? एक्स। नहीं, एंगल एट सर्कमफ्रेंस हाफ होता है और एंगल एट सेंटर डबल होता है, तो 2x का डबल क्या है? 4x। It would be 4x. So can I say that 4x plus 11x is equals to 360? यस, So 15x is equals to 360 इक्वल टू divided by 360, 15 15 on, डिवाइड बाय बोथ साइड्स। तो ये कितना आता है बेटा जरा बताओ? 10 20 ओके 20 और 24 आता है। कैलकुलेटर नहीं यूज करना, अच्छा रफ वर्किंग वगैरह करें। So that's 24. Everybody understand? Barira, Mubin, Mubin, do you understand this, beta? Okay. Moving. Okay, ji. Moving forward with the question, we can see that the diagram shows a cyclic quadrilateral. Okay, it's a cyclic quadrilateral. Cyclic means it will touch the 4 points of the circle. Okay, that's very good. 1, that's 2, that's 3, and that's 4. Okay. The diagram shows a cyclic quadrilateral. So in cyclic quadrilateral, what we have, Isa? Isa, in cyclic quadrilateral, what we have? सर 4 sides touching the circumference। Okay, so what is this? What does it means? Opposite angles equals to what? 180।
180 degree. Yes or no? Yes, sir. Okay. If I add 2x plus x plus 60 is equals to what? 180. Yes or no? Yes, sir. So it means that 3x plus 60 is equals to 180. 180. 3x is equals to 180 minus 60. 180. 3x is equals to 120. Divide by 2 on both 3, sides. 2, So 3, x, sir. yeah, sorry, divided by 3. So 120 divided by 3 is equals to 40. Yes or 40. no? Yes, Okay, we y is got the equal. value. We got नहीं, ये तो the x x is की. equals x. हमें y की वैल्यू निकालनी है. So हाँ. we can I say that 4x minus 87 plus y is equals to also 180. Yes, x की जगह 40 डाल दे. Very good. So 4 into 40 minus जी, 87 plus 87 y plus is equals y. to 180. 4 into Yes. 140 is what? 160. Yes, sir. It is 160. 160 minus 87 is 7. what? It's 160 में से 87 निकाल लें तो क्या था? 73 plus y is equals to 180. So 73 को right hand side पे ले जाएं. So 180 minus 73 is equals to what? What? Sir, 180 minus 73 आता है 100. 107. So that would be 107 degrees. Is it clear बेटा? समझ आ गई Yes. सबको? बेटा ये जितने भी मैंने सर क्वेश्चन पहले इकट्ठे सर जी पहले जी x निकालना है, फिर ये इक्वेशन में डाल देना है जो ऑपोजिट है, बस आंसर मिल जाएगा. बिल्कुल. तो ये एग्जाम में ये तो मैंने आपके सामने स्ट्रेटेजी कर दी तो आ गई ना. मतलब एग्जाम में आपने ये स्ट्रेटेजी खुद ही अप्लाई करके देखनी है. ठीक है सर ये 2x plus x आपने किधर से लिखा? ये यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा. किधर है? ये क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2x plus x plus 60 is equals to अच्छा, आपने 180 इन और दोनों को एक साथ किया और 180 पर यस डिवाइड कर लिया. सही नहीं समझ नहीं 180 पे डिवाइड नहीं किया. वही समझ अकॉर्डिंग आ गई, बस इज यस इक्वल टू 180 और आगे पर सिंपलीफाई कर दिया. ओके. यस ओके जी. Now according to the question they say that write down the angle that is equal to angle AXD. So AXD के बराबर कौन सा है? AX and D. So AXD के बराबर कौन सा एंगल है बेटा? Which angle is equal to angle AXD? BXC. Very good. So BXC is equal to reason is vertically opposite. Vertically opposite angle है sir. Right ईसा? समझ आई है? Okay, write down the angle that is equal to angle DAX. So DAX. So which angle is equal to angle DAX? Name please. Barira, turn on your mic and tell me that which angle is equal to angle DAX. Come on, anyone? Anyone can answer. कोई भी आंसर कर सकता है. ईसा जी सर. बेटा आप जवाब दे. सर क्या? कि which write down an angle that is equal to angle DAX. तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि इस एंगल के बराबर कौन सा एंगल है? टी. जी टी. which one? टी. टी किधर है बेटा इसमें? सी. सी. बेटा एंगल सी इसके बराबर नहीं हो सकता. एंगल सी इज इक्वल बी टू है एंगल ना? डी. दैट्स बी है ना? एंगल. मैंने बी बोला है. तो पूरा नाम बोले एंगल का. अच्छा अच्छा. एंगल का फुल नेम क्या होगा? एंगल बी कैसे इसका फुल पढ़ोगे? एक्स बी सी. Very good. It would be XBC. So the reason is alternates. नहीं है alternate नहीं, angle in a same segment है. Angle in a same segment. Angle in a same segments are equal. चले जी. Moving forward. Okay जी, last question for today. Now they say that calculate angle APB. APB. So AP and B ये किसके बराबर होगा ये एंगल? ठीक है. So first of all, Isa, जी. we should know that this angle is also 38, right? The one I marked, because AO and BO they are radiuses. Hazim, जी. beta 180 minus 38 is this angle. Agree? 180 minus 38 minus 38. So that is equals to what? Sir, 180. वो क्या नाम है sir? 104. सर 104.
Okay, very good. It would be 104. So it would be 104. Okay, if this is 104, so that would be half. Yes or no? Yes, sir. 104 divided by 2 is equals to 52 degree. 57. 52, हाँ 52. It would be 52 degree. 52 इसे समझ आइए बेटा. Okay. एंगल. ओके. ईसा, ये मुझे बताएं बेटा कि ये 50 एंगल कहाँ पर होगा ट्रायंगल के अंदर. फिर उसी तरह की शेप आ गई है जिसमें तुम स्ट्रगल करते हो. जी ये सर एंगल, समझ नहीं आई. ये 50 एंगल ट्रायंगल के अंदर कहाँ पर होगा ये बताओ मुझे. ये होगा ई. यस, तो आप पूरा नाम बोला करें FEC. सो दैट इज 50. अच्छा अगर ये F का 50 है C है. तो ये भी हाँ. 50 होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये तो आइसोसेलेस तो ट्रायंगल है. बिल्कुल. तो और ये 80 होगा. तो फिर ये वाला 100 होगा कि नहीं. साइक्लिक कोऑर्ड भी है. हाँ ये 100 होगा. ओके जी, Exactly. जरा देखते हैं कि क्या मांग रहे हैं. EFC, EF एंड C 80 डिग्री. अच्छा 2 मार्क्स है. अच्छा ये 2 मार्क्स के लिए वर्किंग शो करते हैं इसको कि 180 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. ओके CDE, तो CDE इज 100 डिग्री. वर्किंग शो करने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क है. चलिए जी, क्वेश्चन हो गया खत्म. एक क्वेश्चन और भी कर सकते हैं. चलें जी, सर बस आज के लिए इतना काफी. एक क्वेश्चन और प्लीज. चलें जी, कहते हैं CBD निकालो. तो CB&D, तो CB&D, तो ईसा ये एंगल कितना होगा बेटा. ये सर वो होगा क्या कहते डिवाइड बाय 2 करें ना. वेरी गुड. सो 124 डिवाइड बाय 2 इज व्हाट, 62 डिग्री. 62 जी. और रीजन क्या है बेटा इसका. सर क्योंकि वो है ना क्या कहते हैं Corresponding? नो 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 नो, करस्पॉन्डिंग. ऑपोजिट. नो, it is angle आर्क at a है ना सर. तो it is angle at a circumference. Okay, ठीक है. Angle. ठीक है it is angle at सर. a तो तो सर ये इंग्लिश में C आपने 35 है तो D भी 35 होगा. एक मिनट सबर करें जरा. एंगल एट अ circumference, ये स्टेटमेंट पढ़ो बार बार. circumference is half of angle at center. angle at center, ठीक है बेटा. ओके, सो ये हो गया हमारे पास. नाउ ये कहते हैं वर्कआउट BAD. अच्छा जी, ये ईसा जो अभी आप बात कर रहे हैं ना बेटा, जरा समय डालें थोड़ा सा. इसको हम मिटा देते हैं अभी. खाली एंगल लिख लेते हैं जो हमने निकाल लिया है, विच इज 62. ओके, ये एक बात आपने ये की है कि सर ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट. ठीक है. सो 180 माइनस 124 कितना आता है. इट वुड बी 56 एंड 56 डिवाइड बाय 2. 28. इसका यस मतलब है ये 28 है तो ये भी 28 होगा. 28 ईसा, जी. एंगल ए कितना होगा. एंगल ए साइक्लिक क्वाड तो नहीं बन रहा. देखो 28 कोई बन रहा है ना. ABCD. तो 180 से किसको माइनस करूंगा. 180 माइनस 35 और 28. वेरी गुड. वो तो 180 माइनस 35 माइनस 28. तो आंसर कितना आएगा बेटा. 25 प्लस 35 प्लस 28 is what. 180 minus 63. So that would be 117 degrees, right? Yes. So that would be 117 Yes, sir. degrees. अच्छा 4 मार्क्स हैं इसके. अच्छा because angle sum in opposite in cyclic quad equals 180 degree. And opposite angle sum in cyclic quad equals 180 degree. चले बेटा, इस वर्कशीट में काफी सारे क्वेश्चंस मैंने खुद प्रैक्टिस कर दिए. बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो है आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करने देख सकते हैं. बहुत सारे सवाल हैं इसमें. ठीक है, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग खुद ओके प्रैक्टिस सर. करें. अल्लाह हाफिज. जिसकी समझ नहीं आएगी आपने मुझे बता देना. ठीक है बेटा. इज दिस क्लियर.